अपने फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। Thank you for giving me opportunity and giving me to talk to you. Thank you. Have a nice day to you. Thank you. Thank you so much, Professor Arya. आपका जो अगर मैं समझ पाया जिस चीज है कि अगर हम we are very close to the nature तो हम नेचर को कम pollute करेंगे, जो कि हम नेचुरल लाइफ से दूर भाग रहे हैं वही मेन कारण है। Now hand over Professor G. please. Our next speaker, Professor M.K. Pandit. Professor M.K. Pandit is retired professor of geology, University of Rajasthan. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर M.K. पंडित सर जो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के जो सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं और 3 दफा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और इसके साथ साथ 26 और 34th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन ऑफ अंटार्कटिका 2 बार वो अंटार्कटिका का विजिट कर चुके हैं इंडियन टीम के साथ और इसके साथ साथ इन्होंने मोर देन 32 कैंडिडेट्स को पीएचडी कराई है और 178 आर्टिकल्स उनके पब्लिश हैं और मुझे लगता है कि जियोलॉजी में प्रोफेसर M.K. पंडित सर को पहचान की जरूरत नहीं है और ऑल ओवर इंडिया और मैं सबसे पहले मोर देन 20 कंट्रीज को सर ने विजिट किया है और अभी भी मुझे लगता है कि जब वर्किंग थे तो मुझे लगता है 6 मंथ्स तो बाहर ही रहते थे, अभी भी वो कंटिन्यूअस बाहर जाते रहते हैं तो सर का रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर रहा है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो लेक्चर डिलीवर करें। थैंक यू प्रोफेसर जीपी सिंह फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन और ये गंगा दुआ कॉलेजेस का धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए योगेश का ब्लास्टर से जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का and I can tell one thing that the quality of the food is inversely proportional to the number of people in the attendance after lunch. So I also would like to thank you for a nice food that you offered as lunch. And as I've been told that time is limited, 10 minutes. So I was fascinated by the title of this conference. It covers so many things, and it doesn't cover what I am working on. But when I looked at it a little more carefully, I found that there are a lot of things are common here. And being a geologist, I had an opportunity of being part of the nature, of being or having watched the nature very closely. So it's not a lecture, it's not a talk, it's some of my experiences that I'm sharing with you. So when I tried to look at spiritualism, as I'm a student of science, तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए ये जो अध्यात्म की बात करना और बड़ा उचित भी नहीं होगा कि मैं अध्यात्म की बात करूँ बिना किसी बैकग्राउंड के। लेकिन मुझे लगा कि शायद हम अध्यात्म में जब भी अध्यात्म का रेफरेंस जब भी देते हो तो उसको धर्म के संदर्भ में देते हैं। I think मेरे हिसाब से spiritualism is something this religion can be one of the components, but spiritualism is beyond that religion. And it's basically the development of personal belief system और बहुत सरल शब्दों में कहा जाए अपने आप को खोजने की बात जहाँ की जाती है वो शायद मेरे हिसाब से वही spiritualism है, self realization and reaching that inner happiness. This is all I have collected the information from different sources, but I found it is interesting. When you look at this spiritually, it covers a vast range. Everything that we experience during our lifespan, everything is covered in spiritualism. इसकी definition भी देखी but जब इसे और गौर से देखा तो एक बहुत इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप मुझे नजर आया नेचर के साथ और मुझे नजर आया अपनी जो हमारी जो अपनी वैल्यूज हैं जिनको जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं हमारी जिनको हम इतने सैकड़ों सालों से नर्चर करते आ रहे हैं और जब हम बात करते हैं जो हमारी और
हमारी इस संस्कृति में प्रकृति या नेचर का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये जो 5 मूल तत्व हैं, ये सब नेचर के कंपोनेंट हैं, जिसको वायु, अग्नि, पवन, जल और भूमि या पृथ्वी के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक हमारा प्रश्न प्रकृति को लेके या प्रकृति के साथ के संदर्भ में जो जिस नजर से हम प्रकृति को देखते हैं, तो हमने तो प्रकृति के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो जैविक या अजीब जो कंपोनेंट्स हैं, तो सबको ईश्वर का स्टेटस दे रखा है। चाहे नदियां हैं, पहाड़ हैं, वन है, ये सब हमारे लिए कुछ है, कुछ नहीं है हमारे लिए हमेशा से। एंड जो हमारी जो एवरीडे जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमारी बेसिक लाइफ का पार्ट है। हमें जिस प्रश्न से हम लोग सब आते हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की हुआ करती है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का काम तो सब तब से करते आ रहे हैं जब बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चाहे किसी भी तरह का जानवर हो, चाहे वो चूहा हो या सांप हो, उसका एक विशेष स्थान है हमारे संस्कृति में, और इस सब की रक्षा करना हमारा उद्देश्य रहा है। So we have been, and of course, ये जितने भी प्लांट्स हैं, आज हम परेशान हैं इसको लेके। फॉरेस्टेशन एक हमारा इशू है बहुत बड़ा, जिसको लेके हम चिंतित हैं, और ये चिंता जायज भी है। अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो हमारा अपना अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और ये वन तो हमारे कुछ नहीं हुआ करते थे, और बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं जिनकी आज हम जिनकी जो वैल्यूज है, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज हम आज शोध के दौरान पता कर रही है, उनके बारे में हमें बहुत पहले से जानकारी थी। So, as Dr. GP Singh mentioned about my Antarctic trip, so I think that was completely different experience for me. और जिसको प्रकृति को देखने का, प्रकृति को समझने का, और एक आध्यात्म की तरफ मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मैं ये स्पष्ट कर दूं, लेकिन एक आध्यात्मिक सोच जो डेवलप हुई और चीजों को देखने का नजरिया बदला, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अगले 5 मिनट में। So when I describe Antarctic, it's an altogether different place or experience, और अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए, it is an out of the world experience, और उसके जैसे और कोई उसके समकक्ष और दुनिया का कोई भी विश्व का कोई भी जो ग्लोब का कोई पार्ट है, उसके साथ उसके समकक्ष नहीं रखा जा सकता। When you look at different components, आपको वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज वहाँ पे नजर आती है। आप पूरी प्रकृति को अपने सामने देखते हैं। आपके और प्रकृति के बीच में कुछ नहीं होता। यहाँ तो हम लोग मकानों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो बीच में आती है, वहाँ पे आप हैं और प्रकृति है, और आपको ये महसूस होता है कि आप प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा जहाज जो है, जब आप सुबह जहाज की यात्रा में लोग थे, सुबह उठ के जब बाहर निकल के देखते थे तो चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, मतलब पानी, और दूर होराइजन पे आसमान नजर आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको वो जो जहाज था, बहुत बड़ा जहाज, 200 मीटर का जहाज, वो बहुत छोटा सा नजर आता था, और आपका अपना अस्तित्व एक तरह से गौण हो जाता था। आप तब रियलाइज करते हैं कि जो प्रकृति को आप जीतने के लिए चले हैं, आप ये मानते हैं कि हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली कि हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपको महसूस होता है कि आप बहुत छोटे हैं। तो कुछ वही के दृश्य मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आप खुद महसूस कर सकें। मैंने तो खुद देखा है, आप महसूस कर सकें कि जो प्रकृति अपने नैसर्गिक रूप में, स्ट्रीम रूप में जब होती है, जहाँ पे आपका किसी तरह का जो मनुष्य का इंटरवेंशन नहीं है, और उसकी जो वास्टनेस है, उसका जो एक्सपांस है, वो कल्पना के परे है। और कई चीजें इस अनुभव में सीखने को दी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वहाँ पे, जब आपका जहाज जाता है तो कुछ हिस्सा जहाज का हिस्सा जो है आपको रास्ता खुद बना के चलना पड़ता है। आइस शेल्फ कहते हैं उसको, वो जो बर्फ, पानी का जो ऊपर का हिस्सा वो जम गया होता है, तो आपको उसे तोड़ते हुए निकलना पड़ता है। तो ये शायद जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जहाँ रास्ता नहीं हो आपको बनाना पड़ता है। और ये
अगेन एज आई सेड, इन कमरों में बैठ के या मकानों में बैठ के या जब शहरों में जब बैठ के गाँव जब बात करते हैं तो शायद नेचर का कोई आइडिया नहीं होता, नेचर कितना नेचर का वो है, स्पैन कितना है। जब वहां जब जाके देखा चारों तरफ से आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और आप उस वो जो एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका काम करते हुए, सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। अब ग्लेशियर्स हमने बहुत सारे देखे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उसके बाद जो ग्लेशियर जब खत्म होता है वो एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है बर्फ का, दैट इज कॉल्ड एवरी आइस, जस्ट आइस एंड आइस एंड आइस, नथिंग एल्स। So this could be different faces of nature, as you could see, and I had an opportunity to watch them very, very closely. Life is also there. Life finds its way. अभी हमने सर का लेक्चर सुना। ये under these extreme conditions, जहाँ पे highest temperature 0 तक जा सकता है coastal areas का, highest would be 0 और plus में जब चला जाता है तो उसके क्या है बहुत गर्मी होगी। But life can still be there. These are various penguins and sea. Some birds you can see also flying there. और this is a very unusual phenomenon जिसको कहते हैं अरोरा। इसको देखने के लिए आपको पोल पे जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, या तो नॉर्थ पोल पे जाइए या साउथ पोल पे जाइए। अगेन जब आप पूरा का पूरा जो आसमान है, आसमान में ये बड़ी एक तरह की जो है दिवाली की आतिशबाजी जैसे बड़ा यूनिक कलर दिखाई देता है। पूरा आसमान आपको एक कैनवस जैसा नजर आता है, किसी बहुत बड़े चित्रकार का बनाया हुआ चित्र। So another aspect is इस थीम का है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात ही करते हैं, कॉन्शियस उस बात के आगे नहीं बढ़ते। आज शायद अखबार में आया था कि राजस्थान में एक ये क्या बोलते हैं ट्रैफिक सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आया कि जरा इसमें थोड़ा सा हेलमेट पहन के निकलना, क्योंकि थोड़ी चेकिंग ज्यादा होगी। दैट इज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हेलमेट हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि चेकिंग ज्यादा हो गई है, इसलिए ये पहनते हैं कि हमारे सर की रक्षा करता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सो वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन जब व्यक्तिगत स्तर पे बात आती है कि आपका व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन क्या है, तो शायद सोच में या अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि मेरे अकेले से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अंटार्कटिक में जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ पे जिस तरह की पर्यावरण के प्रति चिंता, जिस तरह के आपका जो व्यवहार है वो पर्यावरण से के प्रति जितनी जागरूकता नजर आती है वैसा कहीं नहीं है। और ये अपने आप में बड़े विचित्र सा ये वो है उदाहरण है। अंटार्कटिक के बारे में कभी चर्चा करेंगे, अभी अवसर नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अंटार्कटिक मुख्यतः ये जो है साइंटिफिक काम के लिए ही अलाउड है, और किसी और कमर्शियल या मिलिट्री एक्टिविटी के लिए अलाउड नहीं है। और साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए भी ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाए कहीं चले जाएं। विशेष आपको आपका जो वैज्ञानिक शोध है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते, इवन एज साइंटिस्ट। Antarctic स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज, ये वो बड़े वल्नरेबल हैबिटेट्स हैं जहाँ पे अगर आपका फुटफॉल अगर ज्यादा हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ की जो नेचुरल लाइफ है उस पर डिस्टर्बेंस हो। 1 मिनट। There's another ESMA Antarctic specially managed areas कि वहाँ पे आप अगर आवश्यक हो तभी जाइए, अन्यथा आप मत जाइए। और इन चीजों की अक्षरशः पालना की जाती है। और उसमें एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ। This is a global effort, ये कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, पूरा का पूरा जितनी कंट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व है वो सब इस पे काम कर रही हैं। हम लोग गीले और सूखे कचरे को डिवाइड करके बड़े खुश रहते हैं। वहाँ पे जो इसका वेस्ट मैनेजमेंट है, itself an example, different types of waste is separated and finally, और ये जो वेस्ट होता है, ये हर तरह का वेस्ट होता है, it includes the human excreta,
वो भी आपको पैक करके वापस अपनी कंट्री में लाना पड़ता है। स्पेशल टॉयलेट, आई ऑलवेज शेयर दिस। वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर वाटर मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है। सो फाइनली आफ्टर बीइंग देयर, आफ्टर बीइंग पार्ट ऑफ दिस, जो सेल्फ रिलेशन जो मैंने अपने में परिवर्तन पाया वो ये था कि नो मैन इज फॉर एवरीवन, एनीवन, कि जो सब है वो सब अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, हर एक को कोई अच्छे जरूर है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ द नेचर, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। हम लोग जो नेचर को कंट्रोल करने की बात करते हैं बिल्कुल गलत है। नेचर का जो अपना जिसको सेल्फ करेक्शन बोलते हैं वो इतना इतना ज्यादा होता है कि हम सबको कभी नहीं कर सकते। So thank you very much, and sorry I've taken 1 minute extra. Thank you. Thank you so much, sir, for your nice presentation. Thank you, sir. Our next speaker is Sudhanshu Dwivedi, Department of Physics, War College, Jaipur. Sudhanshu Dwivedi is present here. अच्छा, okay, thank you. Next speaker is Ashish Kumar Shah. आशीष कुमार, ओके, अच्छा। पुरुषोत्तम आर.के. शर्मा, महेश कुमार सोनी, he will present online. Mahesh Kumar Soni, are you connected? Yes, he is available. Good afternoon. Mahesh Kumar Soni, you can start your presentation. Yes, my name is Mahesh Kumar Soni and I am research scholar from the Jainan Vyas University, Jodhpur. मेरा टॉपिक है प्रवासी पक्षी ऊर्जा के संरक्षण में जो विद्युत लाइनों को किचन गांव में स्थानांतरित किया गया है उसको लेकर के पत्रकारिता का क्या प्रभाव हुआ उसको लेकर के मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। Hello. Hello. Yes, you are audible. You can start your presentation. Yes. जो डेफोडिल प्लेन बर्ड्स है वो मंगोलिया, कजाकिस्तान, ईस्टर्न एशिया से, चाइना से माइग्रेट करके एवरी विंटर वो राजस्थान और गुजरात में आते हैं और इनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो राजस्थान का किचन गांव है, वहां पे अप्रोक्स 30,000 बर्ड्स विंटर में यहाँ पे रहते हैं। तो इन बर्ड्स का यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ आना एक बहुत बड़ा जो है टूरिज्म स्पॉट बन गया है और पक्षियों के विहार को लेकर के लोग पूरे विश्व में ये किचन गांव प्रसिद्ध हो गया है। इसके बाद में यहाँ इन पक्षियों के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होने लगे। तो इन पक्षियों के लिए जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सबसे बड़ा खतरा है वो है जो हाई इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। तो ये इसी गांव में भी इस तरह की ये समस्या थी। तो इस मुद्दे को लेकर के जो समाचार पत्र है यहाँ पे जो चलने वाले लाइक एज राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, इन समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को लेकर के लगातार समाचार प्रकाशित किए। तो इस मुद्दे को लेकर के समाचार प्रकाशित होने के बाद क्या इन विद्युत लाइनों का समाधान हुआ या नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर के मैंने रिसर्च किया। तो मैंने 2011 से 2017 तक के जो न्यूज पेपर्स की कटिंग है उनका एनालिसिस किया। तो उन्होंने शुरुआत में जो 2011 से 13 तक तो समाचार पत्रों में इस तरह से समाचार प्रकाशित की विद्युत लाइनों की चपेट में आने से इतने ऊर्जा पक्षियों की मौत, और उसके बाद में समाचार पत्रों ने कुछ अपना जो समाचार का ट्रेंड है वो बदला। तो इनको लेकर के ये जो हादसे हो रहे हैं लगातार उस तरह के समाचार आने लगे। उसके बाद में कई समाचार पत्रों ने जो लगातार कैंपेन किया और उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि राजस्थान पत्रिका में एक फुल पेज आर्टिकल छपा था, उसमें उसका हेडिंग में ऊर्जा केवल की तरह में सारे देश, इस शीर्षक के समाचार प्रकाशित होने के बाद में यहाँ 1700 केवी लाइन उसको हाईकोर्ट वीडियो अलाउ करा, ये कैंपेन चलाने का अलाउ नहीं समाज पत्रों में और कई सारे कैंपेन में
कि वहाँ पे खींचर गांव के जो एरिया था जो विजिट नहीं थे पक्षियों के लिए होने वाले हादसे बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए हैं। ये पक्षियों के संरक्षण के लिए समाचार पत्रों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे किया गया है। धन्यवाद। It's over. Okay. Thank you so much, Himanshu. And now we have next speaker, Dr. Lakshmi Muthu Krishnan from Bangalore. Actually, she is very highly trained scientist. She did her BSc from Sri Lanka, PhD from Oxford University, London, and postdoc from Harvard Medical School, and then next postdoc she did from Indian Institute of Science. Now she is freelancer and she is actually doing a lot of work in environmental science. Dr. Lakshmi, are you connected? Dr. Lakshmi? गूगल मीट से कनेक्ट करो। गूगल मीट ही है सर। अच्छी मैडम को कॉल करके बस उनकी आईडी किसी और नाम से तो नहीं सर? नहीं लक्ष्मी तो लक्ष्मी। हेलो मनीष कुमार को कनेक्ट कर दो तब तक। मनीष को कनेक्ट करके देखो। हमारा लिंक भेज दिया। मेरी आवाज आ रही है क्या? Can I start with the presentation now? You can start. Okay, thank you so much. Please let me know if my slides are visible to all of you. You can share your screen. Yes, I am sharing. Wait for a minute. Is this visible? Yes, you can. Yes, it is visible. Now you can start. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much, Dr. Upadhyay, and everyone present here for giving me this opportunity for presenting my topic here. So my research topic, this is not directly related to your seminar or conference. This is indirectly related to your conference. So the topic of research is ACC-DNA is producing bacteria mitigating salt stressing crops. So here in this topic, I am talking about the benefit of bacteria or other health against salt stressing crop. Plants does no need or at leverage and background why this started and what was started those promoting bacteria, those are producing this ACC deaminase
the ACC deaminase enzyme. So a number of plant growth promoting bacteria are there present in rhizosphere of the crop plants, and they can directly affect the plant's metabolic activity, and they can enhance the plant growth by mitigating the ethylene accumulation in the plant root. So generally when plants are growing, there is the accumulation of ethylene. But generally, ethylene, those are accumulated in the plant root, those are in very small amount. But when there is salt stress condition, when there is a more salt stress condition and plants are there in the salt stress condition, this salt stress condition is working at stress for the plant. So if this abiotic space is there for the plants, plants are not able to grow in this abiotic space condition. So in that condition, what type of research is done? There is some isolation of ACC DNA producing bacteria. Those are going to reduce the ethylene level in the plant's roots. So if there is less accumulation of the ethylene in the plant's root, plant is feeling very less stress. And if plant is feeling very less stress, plant will be able to grow in a very good condition, or plant will be able to grow in a very fluent way. So this is the type of plant growth promoting bacteria. Those are producing ACC deaminase. So here in this figure you can see this right part, this is a bacterium, and this left part, this is a part of plant root. So whatever mechanism is there, this ethylene is what is the precursor, or this is the precursor, or this ACC is what is the precursor of this ethylene, and this SAM, this is adenosine methionine. So this methionine is converted into ACC, that is aminocyclopropane carboxylase. This is converted into ethylene as a part of this metabolic pathway. Okay, so this is the methionine metabolic pathway, and through this pathway there is the accumulation of ethylene in the plant root. But in the plant root, when more ethylene is accumulated, so such conditions is there when condition is saline or salty condition is there in the soil. So this saline condition or this salty condition, when plants are growing in this saline condition or salty condition, they are feeling stress and more ethylene is accumulated there in the plant root. So this ethylene accumulation is not beneficial for the plant. So this bacterium, what this bacterium is doing? This bacterium is converting this ACC into alpha ketobutyrate. And how they are converting this ACC into ammonia and alpha ketobutyrate? They are producing some enzyme called ACC deaminase. So this bacterium, this is producing ACC deaminase and converting this ACC into ACC and into ammonia and alpha ketobutyrate. So as soon as this ACC is converted into ammonia and alpha ketobutyrate, the accumulation of ethylene in the plant root is going to be diminished. So if the plant root has the less ethylene, it is going to feel with less stress. So there is the suppression of ethylene production, and there is the alleviation of plant stress caused by salinity in the plant roots. So we got several results. We isolated different 110 bacterial strains from different agroecological regions of India, and we observed the set value of the salt tolerance, where up to what extent the plants or the Mr. Manish, you have 1 minute to conclude. Tolerate this penicillin. You have 1 minute to conclude. Okay, I have to compile within 2-3 minutes. No, you have 1 minute to conclude. Please, because we have many okay, no speakers. problem. Okay, no problem. So in my result, you can see we got some good results as compared to control and the inoculation of the bacterial PCPR, and we observed in the maize plant also, and there also we got good results in terms of ACP synthesis activity. And here we have received some good result after the CMS analysis also, and we can see the effect of this SPM producing bacteria as compared to other group of bacteria. And here in the last, the gene expression analysis was done, and using this gene expression, you can say that if this gene expression is increased when SPM producing bacteria is inoculated into the plant root rhizosphere, that is going to mitigate the ethylene level accumulation. So the conclusion is that there is the mitigation of salt stress that is making agriculture more sustainable. The soil ecosystem and its positive interaction with microbiome making environment more conscious and vulnerable. The natural ecosystem affected by abiotic stresses are re-established naturally.
So this is all about my work. Thank you very much everyone for your patience and listening me. Thank you, Manish. Thank you, Manish. Thank you. Dr. Lakshmi, are you connected? Lakshmi? Lakshmi Siddha, are you connected? Yes, I'm connected. Yes. Yes, I'm connected. I'll just upload my video, my presentation. Yeah, I need to give my PPT. You can share your screen. Yes. Yes, yes. You can actually put in slideshow. Can you Yes, hear yes. me? Yes, yes. It is visible. Okay. Now you can start. All right. Can I start? Yes, yes. You can start. Okay. Okay, good afternoon, friends. At the outset, I would wish to thank the organizing committee of Kamla PG College, Dholpur, Rajasthan, for inviting me to give a talk today. Yes, yes. You can continue. You can continue. My talk today, Yes. my talk today is about biodiversity and conservation, ancient and modern aspects. The definition of biodiversity is biological diversity, which means the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, aquatic, and aerial ecosystems, and the ecological complexes of which they are a part. Biodiversity comes from two terms, biological and diversity, and refers to the phenomenal variety of life found on Earth, plants, animals, fungi, bacteria, and other microorganisms, the communities they form, and the habitats they live in. What is biodiversity? It is the enormous variety of life on Earth, and the scale is from the smallest microbes to the largest plants and animals. An ecosystem is a dynamic complex of plant, animal, and microbial communities, which is biota, and their non-living environment, or abiota, which all interacts as a functional unit. This is usually studied at three levels, which together create the complexity of life: ecosystem, genetic, and species diversity. Biological diversity is often studied at three levels: ecosystem diversity, in which are different habitats where living things are found; genetic diversity, which is the variety of genes contained in plants, animals, and microorganisms; and species diversity are the different species of living things. And I have just put a few pictures for illustration. The number of living organisms, the numbers are mind-boggling, and there are a whole lot of sizes and lots of variety. Scientists estimate that there are about 8 to 9 million species of plants and animals in existence on Earth. However, only about 1.5 million species have been identified and described to date. Millions of organisms on Earth still remain undiscovered. The largest proportion of undiscovered species are in the tropical regions of the world. More than 70% of all species recorded are animals, while plants, including algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, comprise only 22% of the total. The Amazon rainforest in South America, which is a tropical biome, has the greatest biodiversity on Earth. Insects are a species-rich taxonomic group, and of all the total animals identified, they comprise about 70%. Fungi
are also very, very widely present on Earth, and the total fungal species on Earth is greater than the combined total of the higher animals on the planet. There are lots of natural ecosystems in the world, such as tropical rainforests, temperate deciduous forests, scrubland, tropical and temperate grasslands, mountains, deserts, and tundra. There are also other natural ecosystems, rivers and lakes, mangroves and estuaries, coasts and beaches, oceans and coral reefs, etc. Artificial ecosystems are created by man, such as wildlife sanctuaries, farms, plantations, fields, parks, home gardens, etc. If you consider the biodiversity in India, India is one of 12 mega biodiversity areas on Earth, and it is one of 12 centers of origin of cultivated plants and domesticated animals in the world. So this is very, very significant. India has only 2.4% of the total land in the world, but it has 7 to 8% of the Earth's total biodiversity. So this is very significant indeed. Among the documented records, 91,000 species of animals have been found, of which about 55.8% are amphibians, 45.8% reptiles, 12.6% mammals, 4.5% birds. These are all present in India. Among 45,000 species of plants found in India, about 33% are endemic. What is a biodiversity hotspot? A biodiversity hotspot is a biogeographic region that is a significant reservoir of biodiversity and is also threatened with destruction and extinction of some of the species. Of the 34 global biodiversity hotspots, 2 are in India, the northeastern Himalayas and the southwestern Ghats. Biodiversity is vital for functioning of sustainable ecosystems, and it provides various services for human beings, such as food, water, timber, fuel, fiber, pharmaceutical components, and genetic resources, such as crop plant seeds and livestock breeds. It is also required for the functioning of regulatory systems, such as pollination, seed dispersal, water purification, prey-predator balance, mitigation of pollution, resisting invasion by foreign species. The abiotic influences of biodiversity are it helps in soil formation, carbon sequestration, and the biogeochemical nutrient cycling. And it is extremely important for climate regulation and outcome in the case of local, regional, continental, or global. Apart from all the other benefits, biodiversity also helps in cultural influences such as aesthetic. I mean, all of us would love to go and spend an evening in a beautiful garden. Recreational, you can go for walks and relax and, reduce the stress levels. And also spiritual, where you can, easily sit in a garden and meditate. Biodiversity also contributes to ecological indicators, ecosystem conditions, and they are critical drivers of change. It contributes to the inner core of human well-being. When we have to quantify biodiversity, we have various parameters. Spatial patterns in biodiversity is a bit difficult to quantify. Then you can have taxonomic, functional, trophic, and genetic phases, which are rather poorly quantified. Then you can study species richness in an ecosystem, which has to be researched. Taxonomic classification are attempted for higher species. Microorganisms have been largely ignored. Dr. Lakshmi, you have to conclude within a minute. In a minute? Yes. Okay. Whereas inventories of species are incomplete, species compositions and richness is insufficient, patterns for terrestrial and marine systems are attempted, and complete and exhaustive species inventories are needed for all ecosystems. Humans dominate Earth, and we destroy habitats which lead to loss of biodiversity. Biodiversity varies with location of time and environmental impact, and it is estimated
that 50% of the 8 to 9 billion species will become extinct by 2050. I will pass this slide. Species extinction in nature is very slow, but because of human beings and our greed, it has accelerated about 100-fold, and it is not slowing down. And the main reasons are overpopulation, land use, exploitation, and industrialization and pollution. If we go by, I'll just finish with this slide. If we go with ancient conservation methods in India, we have worshipped, nature. We have worshipped various Vahans as animals for gods, and we have undisturbed sacred groves in Kerala as well as Rajasthan. And ancient Indian medicine, such as Ayurveda, Unani, and Siddha, help in holistic therapy. Conservation in the modern sense, we have to identify species and habitats. We protect by making zoos and sanctuaries. We reforest a forest, create catchment areas. We have to tackle invasive species, integrate conservation into agriculture, forestry, and fisheries. Use biofertilizer and biopesticides instead of chemicals. Local communities and ecotourism. Climate change mitigation, education and information. We need strong national institutions and legislation and international cooperation between governments. This is my last slide. Conservation in international strategies like the Convention on Biological Diversity in Earth Summit Rio, the CITES, which protects animals and exploitation by international community, and the Convention on Wetlands of International Importance and Ramsar Convention for the conservation of wetlands. We need to do reverse degradation to ensure species survival. I have a few more slides, but I think there's no time, right? Yes, yes. Actually, Dr. Lakshmi, thank you very much for your systematic and wonderful presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dr. Renu Kohli, are you connected? Dr. Prabha Dikshit, are you connected? Dr. Prabha Dikshit. Dr. Prabha Dikshit. Dr. Renu Kohli. I think we should conclude this essay, and the remaining will be given chance tomorrow. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा ये तकनीकी सत्र यहीं पर अब वाइंड अप होता है। अगले सत्र में हम कल मिलेंगे, लेकिन अभी संध्या काल के अंदर एक प्रोग्राम और होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी इसमें आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम 6 बजे होगा ना सर? 7 बजे? 6 बजे का समय है, इसलिए सभी इसमें आमंत्रित हैं। हमारा कल का जो तकनीकी सत्र है वो प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले 5 बजे एक योग सत्र भी प्रारंभ होगा, इसलिए जो उसमें आना चाहें वो वहाँ आमंत्रित हैं। कल भी हमारे 3 सत्र आयोजित होंगे। धन्यवाद। आज की तकनीकी सत्र के लिए महोदय आभार व्यक्त करेंगे। 2 शब्द
गायब हो जाने की कैसे निकला है साढ़े 6 के बाद तो शुरुआत